to another podcast of Anthropic Mic Testing with me, Captain Phillips. Now, today my guest here is someone who I have seen compete on stage and someone who knows how to manage his time as an athlete, as a coach, and is doing really and amazingly well. He's won titles in Mumbai and he's also won a title of Maharashtra Shri. And apparently, every week you see you check him on social media, he's competing for some event or the other. So, without me wasting any time, let me introduce you to my guest at this point of time. My guest right here at the Anthropic Mic Testing, we've got Mr. Harmeet Singh, aka Honey. Thank you. So, how do you feel? You've been competing back to back shows, winning shows. How is it? How has the journey been? So, first of all, thank you for this is my first podcast, first experience, and I've never been to any podcast before, so a bit nervous. Don't need to be. Don't need. What to say and what not to say. I'll be open, like I'll just talk as a friend, Absolutely, whatever is buddy. going on. Absolutely. And about competing, I have 2 months. I have done 8 shows now. Less than 2 months, 8 contests, back to back. Every week कोई हो रहा है and out of 8 5 I got title, Wow. one में I got runner up, and and there are like next 15 days में there are 6 more contests to go. Wow. So, I've seen people on social media coming, complaining, crying, saying that हम लोग इतना कुछ करते हैं बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट के लिए एज एन एथलीट्स बट बदले में हमें पैसे नहीं मिलते. What is the fact? The thing is, since you've competed in a month, you've competed in so many shows, you've got shows lined up to compete. Is there money in the sport of bodybuilding? Of course, there's a lot of money in bodybuilding competitions, but you have to choose the right show. So the shows which I am competing is like I am Mumbai based, so there are a lot of competitions in Mumbai and Maharashtra. So like this, every state have a lot of competitions. So people play a show, एक कॉन्टेस्ट खेल के बस हो गया, अभी एक शो की तैयारी की खत्म. आगे नेक्स्ट देयर आर 10 shows. Right. दे डोंट थिंक अबाउट कि नेक्स्ट 4 weeks में आई हैव अनदर शो जिसमें अच्छा गुड प्राइज मनी है. एक शो खेला जिसमें प्राइज मनी ही नहीं है एंड दे शट बिकॉज 2-3 लाख रुपए लगा दिए एंड कुछ भी नहीं मिला. इवन जीत के भी कुछ नहीं मिला. तो actually they don't know about bodybuilding. I'll say this. Uh, if you compete properly and smartly, which show to choose and which show to compete, and once you are preparing for show, एक शो खेलने के बाद यू विल नॉट वेस्ट योर हार्ड वर्क इतना टाइम का 6 months 8 months, उसके पहले का 4 months है ना, मे बी 1 साल 2 साल, और उससे पहले कितने सालों से आप कर रहे हो. Right. तो इफ यू थिंक एंड सब कुछ सोच के एक शो पे आप फोकस करोगे, उस यू विल नॉट earn from bodybuilding. So you need to be seen in the market. You need to be seen in the industry. Seen from whom? So seen for people doing that, you're taking the sport seriously. You're competing everywhere. You're seeing you on stage. Your social media is a platform where the people around know that how seriously you're taking the sport. See, I make 10 reels every day. I post 10 stories. If I make 10 reels, 10 stories, I have 100K followers, है ना, और मैं स्टेज पे जाके पेट लेके खड़ा हो जाऊंगा तो मतलब नहीं बनता. है ना. So you have to work on yourself. You have to perform on competition stage. Okay. वर्क ऑन योर सेल्फ ऐसे नहीं कि 3 महीने पहले शो के आपने डाइटिंग शुरू कर दी, और 3 महीने से पहले 3 साल आपने हार्ड वर्क किया होगा. 3 महीना तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ शो. उससे पहले 3 साल यू आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन योर सेल्फ. जितना भी सोशल मीडिया कर लो, कुछ भी कर लो, वॉट एवर यू डू, सोशल मीडिया और एक्स वाई जेड, दैट इज गुड. You get online clients, you get consultations, maybe get online training also. है ना, they'll maybe international clients approach करेंगे. Okay, but if you are talking about bodybuilding competition से पैसा कमाना है, you have to perform on stage. Stage पे आपकी body outstanding लगनी चाहिए. Then only you will win the show. Then only you will get the prize money.
So you've been for the past couple of months. You've been consistent on winning. Winning means either group winner or title winner. You've been consistent on winning. So and you take your workout very seriously. If I'm Yes. not mistaken. You have clients who you train. Yes. I train 5 clients every day. 5 clients every day. Hmm. Uh, I don't know if people are aware of it or not. One of the most fabulous bodies that we have in the Bollywood industry is Vidyu Jambal. We Yes. all know that. And you apparently train Vidyu Jambal. Yes. I do. So how is it training someone of that caliber who people look up to as an athlete and also an actor and who's got a fabulous body? Hard work. How is it? Nothing different. A bodybuilder, professional bodybuilder trains very hard. Same implement body, right? I have a body, he have a body. Okay, body बनानी. He have a shoulders. मेरा भी chest है, उनका भी chest है. मेरा भी shoulder है, उनका भी shoulder है. आज मैंने legs किया है, even if he is training legs, and you have to train hard, like I'm training. Could you also train Aam Aadmi, Yes, right? normal For people also. for Whoever just pays me, I train. daily fitness, just to be Yes, fit. yes. What is the difference in training someone who's a bodybuilder and someone training just to be fit? What is the difference that you? Intensity. Intensity is different. You cannot push a normal guy who is just training for fitness intensely, like very hard push नहीं कर सकते. अब बोलेगा क्या कर रहे हो यार मैं बॉडी बिल्डर थोड़ी हूँ. Generally, someone I have clients out of five, I have 4 clients for normal people. Video trains very hard. Okay, normal clients. Okay, 4 clients. उनको I have to train as per the normal people. Bodybuilders are different. उनका diet different है. Supplements, they use a lot of supplement stacks and different XYZ. Okay, and these are normal basic whey protein use कर लेंगे, BCAA use कर लेंगे, creatine maximum use कर लेंगे because they have office work. Maybe someone is student, he is to study. पूरा दिन they can't ऐसे नहीं कि पूरा दिन जिम का डाइट ये करना है वो करना है XYZ. There are a lot of work to do. Right. है ना. अगर मैं उनकी बॉडी तोड़ दूंगा इंटेंसिटी से, ऑफिस कैसे जाएगा नहीं बेचारा, जाएगा, है ना. पढ़ाई नहीं कर पाएगा, काम पढ़ाई नहीं कर कैसे पाएगा. करेगा, सो जाएगा थक के ना. तो you have to train accordingly. Right. So what is the dark side of bodybuilding? There's no dark side in bodybuilding. If you train I hard, never felt any dark side in bodybuilding. nothing negative. Personally, no, nothing. Things came to you smoothly because you worked hard. Nothing comes smoothly. Nothing comes easy. You have to work hard. Easy and smooth and dark side is different. Dark side is something कि मेरे साथ ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, ये. Bodybuilding, there's no. I had never ever experienced any dark side. Oh, that's really cool about it. Really nice. Never. Let me ask you one thing. See, you are a bodybuilder and you also train people who are bodybuilders. You also have Aam Aadmi. Uh, how important is a testosterone level for a man? Having the right amount of testosterone level. See, now testosterone level in youngster, testosterone level in mediocre, testosterone level in age, you know, accordingly as per it deteriorates. Correct. Okay, now if someone who is from starting घर पे बैठ के कुछ भी नहीं किया है बचपन से, खाली टीवी देखा है, मे बी टुडेज जनरेशन में वी कैन से लास्ट 5-6 years से अभी जस्ट जिम स्टार्ट किया है, ऑफ कोर्स testosterone level may be lower as compared to someone who is very active since his teenage. Correct. कॉलेज में स्पोर्ट्स में किया है पार्ट, टेकिंग एक्टिविटी डूइंग एक्टिविटीज कंटिन्यूसली, जिम कभी ज्वाइन किया है, कुछ भी किया है XYZ. So testosterone levels plays very important role in keeping you active. Right. Okay, keeping you active in everything. Sports, whether you are sitting, you'll not sit like this. You'll be alert. Your mind, है ना, your mind will be alert. You'll not be like, हाँ, आते हैं. है ना, खाते आप, right? And even in like बात करने में भी IQ, presence of mind, everything will depends on there's testosterone is responsible, yes, I think. Right. And of course in building muscle, uh, testosterone is most important.
तो अगर आपको एक क्लाइंट है जिसका टेस्टो लेवल लो है एंड अगर टेस्टो लेवल बढ़ाना है, व्हाट डू यू डू? See, I'm not a doctor. राइट. First thing, I'll ask him to go to a doctor. Whatever I can do is I can train you for your fitness. I can put my 100% exercise कराने में, training कराने में. For this, you have to go to a doctor. I'm not a doctor, certified doctor, or someone ऊपर से सुन के like अरे ये कर लो, वो कर लो, this supplement is good, this supplement is good. I'd never do that, and I'll in future also I'll not do that. So you will not recommend anything to anyone unless and until I you know can. I have used unless and until I have used, and for example, I am using isolate protein of particular brand. Okay, Steadfast I am using. So I recommend People my to consume clients. कोई पूछे कौन सा प्रोटीन लूं, so I recommend कि मैं I personally use this. You can also use this. I don't force them कि यही लो, यही लो, यही लो. Right. Because end of the day, if उनकी body को suit नहीं हुआ, they'll blame me. I have a lot of things Correct. to do except playing blame games. नहीं, so you just say it. अगर जिनको सुनना है सुनेंगे, नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे. आपका सिर्फ काम है to tell people what is good. Yes. What you feel is good. Yes, what I feel is good, what I have experienced is good. Correct. Personally, मैंने जो use किया है ना, for example, I have client who मैं बाहर से ये लेके आया, फॉर एग्जाम्पल मैं दुबई गया था, दुबई से मैं ये लेके आया, इट इज वेरी गुड, आपके लिए भी लेके आओ. मैंने नहीं यार मैं यूज कर रहा हूँ. अरे नहीं नहीं इंडिया वाला ये क्या है. मैंने नहीं मैं यूज कर रहा हूँ फ्रॉम लॉन्ग टाइम, इट इज गिविंग मी रिजल्ट, व्हाई शुड आई ट्राई समथिंग न्यू which may bother me or which may not bother me. Correct. Correct. But something is giving me result, why should I stop that? Right. So in the sport of bodybuilding, where do you look at yourself? Means what is your ideal goal when it comes to being a It's to bodybuilder? improve. No, where do you see yourself? Where do you want to reach in the couple of years as a bodybuilder? Do you want to only be competing in India? Are you going to go abroad and compete? As a bodybuilder, where do you want to take yourself? As high as I can. So so जैसे every athlete, every bodybuilder का एक सपना होता है कि I want to be competing at the Olympia stage. Yes, even I want to. So when do you intend? See, you're still competing in events locally. Yes. You're getting the good exposure. You're getting good cash prizes as prize for the winner category for the overalls. So when do you intend to take it to a level where you know, okay, I can take it to an international level now? See, I've competed in international shows. Right. I've competed. I have in 2015, November 22, 2015, Hong Kong में amateur Olympia हुआ था. I got bronze medal over there. Wow. Okay. And I've seen a physique who have won a gold medal and overall. I know वो physique कैसी है, right? So I can't wait कि वो physique बनने तक I'll not compete. I'll keep on competing because compete कर करके I'll improve. Compete कर करके I'll get experience. Compete कर करके I'll grow. Correct. So I'll keep on growing, keep on growing, keep on growing, and at a देख के physique in like maybe next 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Bodybuilding not easy, right? It takes time. Very slow Okay. process. हाँ, so it need consistency. Maybe 2 years में, 1 year में improvement आ जाए कोई भी. I put my 100%. I'm putting my 100%. Who is your coach right now? Is someone coaching you right now, or you're doing things yourself? He is Murtuza Rashid. He is Chennai based. He is coaching me. He is coaching me since last 1 year now. Not 1 year exactly. 1 year. So are coaches, prep coaches needed for any athlete Yes. to succeed? Yes. क्यों? क्या फर्क पड़ता है? Even Philly का coach है. Hadi Chupan, Derek Lunsford. Everyone have their coach. You can't see yourself and say मेरा ये सही है. You can't see yourself and analyze कि मैं यहाँ पर I'm doing this. I shouldn't be doing this. Right. This is going right. You need someone to guide you, right? So coaches are required. Must. So do you think
जब कोई एथलीट compete करता है in any in the sport of bodybuilding, whether it is an international platform, local platform, knowledge मिलता है उनको sport का, knowledge मिलता है steroids का, बाकी चीज़ों का. So, do you think in the near future you will be being a prep coach for Unless, bodybuilding? see, this is very, bodybuilding is two sides of coin. One is very simple. If you work hard, be consistent, everything, just keep doing what you're doing. Another side is very complicated. Okay, it is, it involves science. Right. Okay, in today's time. Okay, it is not पहले जैसे कि खाली कर लो, because the level of competition from here is gone here. So personally, unless and until I think कि I am knowledgeable enough to prepare someone, and I can implement steroid use. For example, आपको next 5 years के बाद you want to prepare for a competition, bodybuilding show. हाँ, अगर मुझे compete करना पड़ा, I don't want to wait 5 years. 5 years मुझे पता ही नहीं क्या होने वाला अगले 5 सालों में. Yes. अगर मुझे next 3 महीने में या तो 6 महीने में compete करना Sorry. तो कर सकता हूँ. Personally, as a coach for you, I can't work on you. I'm not knowledgeable enough uh, on steroids. Training I can, diet, nutrition I can, but steroids के बिना bodybuilding is not possible. Is steroids harmful? If you play with it, yes. क्या होता है? A lot of things you can't say, body to body depends. किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, किसी के किडनी पे असर आ गया, किसी के हार्ट पे असर आ गया, किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो गई, किसी को हेयर लॉस हो गया, किसी का टेस्टोस्टेरोन क्रैश हो गया, ठीक ही जो है, किसी को कोई डेफिशिएंसी हो गई. टेस्टोस्टेरोन क्रैश होता है? ठीक ही नहीं Yes, होता. नहीं होता. Maybe someone may go through fertility issue. Wow. A lot of things So there are depends on body to body. कि आपकी body, how your body is reacting, how my body is, every body is different, every hormone is different, how body reacts. So tell me one thing, when you consume steroids, there are different brands and different varieties and qualities of steroids available at the market. Yes. जब आप compete करते हो, हमेशा मेरे ख्याल से जब आप compete करते हो, there are few bodybuilders who are there जो हमेशा compete करते हैं. Yes. लेकिन most of the time there are new faces that you see. Hi guys, I hope you're really enjoying the podcast. This is a small break that we're taking to tell you about Andropic. Andropic is India's #1 all-natural testosterone booster. Now, if you're wondering what is the actual ingredient of Andropic, there's only one ingredient and it's fenugreek. Already, we know fenugreek very well as methi. So fenugreek is the only ingredient in this testosterone booster. Now, men above the age of 25 can easily consume Andropic, and it's preferable to consume Andropic at night before heading to bed or in the morning when you wake up. So you feel tired, you feel lethargic, you want to have that energy throughout the entire day. All you need to do is pop one pill of Andropic and feel the energy. If you're working out at the gym and you feel you need to gain some muscle or you need to lose some fat, the one solution that you have is Andropic. And वो new faces टिकते नहीं है, एक या दो शो खेलते हैं and गायब हो जाते हैं उसके बाद. What is your take on that? Mindset. Their mindset. Because bodybuilding, initially 5 years तो आप भूल जाओ कि bodybuilding आपको कुछ देगा. Because 10 साल पुराना प्लेयर एक compete कर रहा है और आप उसके साथ फर्स्ट ईयर तैयारी करके उतर रहे हो. अभी जिसने 10 साल से मेहनत की है प्रॉपरली, ऐसे नहीं कि 10 साल से हर कोई मेहनत कर रहा है वो प्रॉपरली कर रहा है, राइट? बट 5 लोग तो होंगे जो हु इज वर्किंग रियली वेरी हार्ड फ्रॉम लास्ट 10 years. आपने भी पूरा अपना 100% दिया है, बट आपका फर्स्ट ईयर है, 10 years वाला सुपीरियर ही होगा, राइट? करेक्ट. सो सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको यू नो दे वांट टू बी देयर, डू दैट. अभी आप तो इतने सालों से कर रहे हैं. देयर कपल ऑफ देम आल्सो बहुत सालों से कर रहे हैं. देयर सम हु आर जस्ट ब्रांड न्यू इन द मार्केट एंड उनको सिर्फ टेम्पररी फेस के लिए आना है, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज एक्चुअली अ ग्लैमरस, इज वेरी ग्लैमरस इंडस्ट्री. एंड टेम्पररी वाले दे, आई डोंट थिंक सो दे. आप मेरे को बताओ ना जो टेम्पररी, कितने लोग, सो मेनी आई हैव सीन competed and now उनको मिलते, दे आर आम इंसान, आम आदमी जैसे लोग घूमते नीचे,
जिम में डेली जिम गोर्स लाइक दैट बट उनका एक शौक होता है compete करना, वो लोग 90 डेज में तैयारी करके आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन. बट अगेन आई एम सेइंग ना, जो 90 डेज 3 मंथ्स में जिसने तैयारी की है और 10 years से जो कंसिस्टेंटली कर रहा है, दोनों में डिफरेंस होगा, राइट? 110%। यस, तो एक दैट इज झलक में ही समझ में आता। मसल मैच्योरिटी इज डिफरेंट. मसल का एक एक सेपरेशन, डेप्थ, रिपनेस बॉडी में, डेंस बॉडी, है ना? इवन मेरा, मुझे पर्सनली लगता है आई नीड नेक्स्ट more 5 years to get muscle mature. Yes, sir. So you will take a nice slow time to come to that level where you feel, yes, I'm at that Yes. level where I can take it to the I'll next not take level. slow time. I'll go बॉडी के हिसाब से जितना जल्दी हो सकता है. बट बॉडी है ना, इसमें मैं ईट और नहीं कर है ना, सकता। काट, चाकू से काट करके कट तो नहीं बना सकता, राइट? मेहनत लगती है हाँ. सब कुछ चीजें करने के लिए। आई कैन नॉट ड्रॉ और आई कैन नॉट पेंट. राइट आई हैव टू बिल्ड, आई हैव टू मेक इट. राइट। सो जितना टाइम कम से कम लगे, आई ट्राई टू फ्रॉम बाय right way how to do it. For that, maybe in between if I have to stop, maybe blood test करना है, blood test में कुछ ऊपर नीचे आ गया, कोच बोलेगा स्टॉप करो, I have to stop. मे बी 6 महीना स्टॉप करो. जो फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल अप डाउन हुआ है, ओके, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया एंड यू हैव टू ब्रिंग योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, या आपके लीवर एंजाइम्स जो है एसजीपीटी एसजीओटी वो ज्यादा हो गए कुछ, ओके, यू हैव टू उसको नॉर्मल पे लाने. 3 महीने में स्टॉप करना पड़ेगा. 3 महीने के बाद नहीं हुआ नॉर्मल, नेक्स्ट और 3 महीना स्टॉप करना पड़ेगा. 6 महीने के बाद भी नहीं हुआ नॉर्मल, थोड़ा बाकी है, फिर और 3 महीना स्टॉप करो, 9 months ब्रेक लेना पड़े. आई विल डू इट राइट वे, बट आई विल डू इट. There's no shortcuts. बॉडी There is बिल्डिंग no में शॉर्टकट shortcut. नहीं है। If shortcut मारो, then you're taking risk. Bodybuilding is not risk. बहुत से लोगों के साथ ये बातचीत में डिस्कस करता हूँ और आपसे भी डिस्कस करूंगा मैं। लोगों को शॉर्टकट में मजा आता है बिकॉज ऑब्वियसली यू गेट टू अचीव अ गुड गोल इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सबको हैवी उठाने में मजा आता, खुद के लिए नहीं लेकिन सोशल मीडिया कंटेंट के लिए. आप वर्कआउट करते हैं, आप खुद के लिए वर्कआउट करते हैं. Yes, you see my social में थोड़े बहुत, ये ज्यादा नहीं है, ट्रेनिंग वीडियोस है. जितना मेरी कैपेसिटी है, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा हैवी है, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा लाइट है. जितनी मेरी बॉडी कैपेसिटी आप उतना मारते हो. उतना ही. और आई डोंट लाइक डिस्टर्बेंस की कोई मेरे साथ में खड़ा होके सिर पे अरे 5 और अरे 10 और कोई आधा जा रहा है, एक हाथ से जा रहा है, एक हाथ से नहीं जा रहा है, तो वो पुश जस्ट टू, है ना, फिनिश द सेट. हाँ, नहीं, नॉट फिनिश सेट की रिकॉर्ड कर रहे कैमरा में. मोस्ट ऑफ टाइम की आई कीप माय फोन साइड में, और इफ आई वांट टू रिकॉर्ड आल्सो, वीडियो बनाना है, फोटो बनानी, जो भी है, तो आई गिव टू समवन एंड आई से प्लीज बीच में मत करते रहना, मैं जो कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई ट्रेनिंग, रिकॉर्ड करके फोन साइड में रख देना. तो योर फोन इज नॉट विद यू व्हेन यू वर्कआउट, आपको सिर्फ वर्कआउट से सीधे म्यूजिक, अच्छा. फॉर म्यूजिक. So what about people who work out just for the cameras and just for social media content? उनका what is your take on that? That makes them happy. करने दो. अभी उनको see, it's your wish, right? It's my wish कि maybe it makes them happy. Right. Social media makes them happy. Let them do. What is your take on people consuming drugs while working out? Drugs means what are given to women when they're delivering a baby, a termin. लोग लेते हैं, आपको पता होगा. Oh, आपको yeah, दिखाई maybe देता. you can say this is the worst thing. अगर किसी को, पर आपको पता है कि लोग लेते हैं. yes, मुझे पता है लोग लेते हैं, and it is a most addictive. I am saying अगर किसी को सजा देनी है ना, आपको किसी को सजा देनी है, कोई सबसे बेकार जो बदतर सजा, you have to punish someone. The worst punishment is to make them addict to this, because इससे बाहर नहीं आ सकते वो लोग. This is the worst punishment. अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि when a woman is delivering a baby and she's given termin, कितना डॉक्टर कितना इंजेक्ट करते हैं? I don't know about this. डॉक्टर apparently उनको 1 या 2 ml इंजेक्ट करते हैं. I don't know about women delivering a baby. उनको they have given termin.
इवन आई हैव अ बेबी, राइट, सो आई डोंट नो कि मेरी वाइफ को, दिया था कि नहीं? आई डोंट नो. ठीक है. What about guys in the gym who take it and they I have seen people who consume 2 to 3 bottles together. एक दिन में? एक दिन में 2 घंटे के अंदर, 2 hours, 3 hours. तो उनका वर्कआउट कैसे रहता है? उनका वर्कआउट, दे आर zombies. दे ट्रेन फुल डेज, पूरा दिन. आप मेरे जिम में चले जाओ, देर आर ग्रुप ऑफ पीपल्स, सुबह चालू करेंगे, रात तक करेंगे वर्कआउट, 6-7 बजे तक. दे वर्कआउट करेंगे, मे बी आधा 1 घंटा, असर उतर गया, अगेन दे गो टू चेंजिंग रूम, वॉशरूम, आएंगे. 15 वेट्स लगाया है बड़ा बड़ा ना, डेडलिफ्ट मार रहे फॉर एग्जांपल, फॉर 20-20 किलो के, एक साइड में 3-4 प्लेट लगाए, एक साइड में 3-4 चेस्ट प्रेस मार रहे, बेंच पे वेट लगाया हुआ, हैवी वेट, और चले गए वॉशरूम. 10 मिनट हो गया, अरे अभी इस बंदा बेंच मार रहा है, एक लास्ट सेट होगा, इतना हैवी मार रहा है, फर्स्ट सेट तो नहीं मारेगा हैवी, लास्ट सेट होगा, लास्ट सेट मारेगा, चलो हमें चेस्ट मारना है, इसका हो जाएगा तो वो करेंगे. हाँ. अरे 10 मिनट हो गए अभी तक आया नहीं, वेट लगाओ. 20 मिनट हो गए अभी तक आया ही नहीं यार. मेरा तो वर्कआउट, मेरा नेक्स्ट क्लाइंट है, मेरा वर्कआउट कंप्लीट करना है, मुझे चेस्ट करना है, मेरा नेक्स्ट क्लाइंट का टाइम हो गया, तो मेरा वर्कआउट कैसे होगा? Correct. इस चक्कर में मैंने अपना जिम चेंज कर लिया. क्या बात कर रहे हैं आप? लोग पागल है. देयर आर पीपल हु आर रियली इनटू दिस, Right. एंड जिनकी वजह से आई हैव चेंज द जिम, जस्ट बिकॉज उस जिम में आई कांट सी, आई वर्क फॉर 5 क्लाइंट्स. मैंने आपको बताया 5 क्लाइंट्स अ डे. ओके, सो इफ एवरी क्लाइंट को 1.5 आवर आप पकड़ो, तो 5 क्लाइंट्स का 7.5 आवर्स हो गए, राइट, प्लस ट्रेवलिंग टाइम, एवरीथिंग. उसमें मुझे अपना वर्कआउट करना है. अगर मैं किसी के लिए 20-20 मिनट रुक जाऊं ऐसे ही, तो वैसे ही वक्त निकल जाएगा. सो इसलिए आई चेंज जिम किया. यहाँ पर तो इनको बोल के 1 बार 2 बार बोलोगे, जिम में मैनेजमेंट को कंप्लेंट करोगे, कुछ फायदा है नहीं. चलो वो आप, मैं मान गया कि चलो एक हर एक चीज हैवी मारने के लिए लोग लेते हैं. नहीं, हैवी मारने के लिए नहीं लोग लेते. एक आदमी अभी लड़कियां कहाँ हैवी मारेगी, आप बताओ. कार्डियो करने के लिए भी लोग एडिक्टेड इस तरह है, कार्डियो करना है, दे आर यूजिंग शिट थिंग एंड डूइंग कार्डियो. कार्डियो की क्या जरूरत है उसको? ये लोगों को आदत हो गई गलत चीज लेने में, एडिक्शन. और उतना जल्दी निकलता भी नहीं है. मैं बोल रहा हूँ ना, द वर्स्ट पनिशमेंट टू गिव देम द एडिक्शन. एडिक्शन अपने आप हो जाएगा, 1-2 बार यूज कराओ, दे आर एडिक्टेड. Getting to a very lighter topic now. In the sport of bodybuilding, when you started off, you used to go when you were studying for MBA. Yes. You used to know time and go and see the workout and be with the god of Indian bodybuilding, Suhas Dada Kamkar. Yes. How has it been with working? You know, seeing Suhas Dada work out. Look at him compete in the year 2010. तभी दादा was at his peak. Yes. Nothing. He used to train. मुंह से एक वर्ड नहीं निकालना. चुप. अगर if you are उनके हिसाब से हो, then only you can enter the gym. 10 बजे जिम बंद होता था, right? Morning 6 to 10 जिम का टाइम. 9:30 9:45 सर आते थे, सुहास सर जिम में वर्कआउट करने. ओके, जिम बंद करते थे, अंदर वर्कआउट सर करेंगे 1-2 बजे तक. 10 से अपना पूरा वर्कआउट, डाइट वाइट सब कुछ अंदर जिम में. You just have to stand quietly. You don't have to say anything. See his workout. अगर कुछ बोला, चलो डिस्टर्ब कर रहे हो आप. He was that focused. I don't know any negative, positive, anything. I am in my zone. Let me do what I am doing. It आपका मतलब है, आप यहाँ पर आए हो, मेरे मतलब के लिए नहीं आए हो आप, right? You are learning something from me. I am not learning from something Correct. from you. You are getting something. I am not getting anything from you. He was doing favor on me कि I was watching his workout. कंपटीशन के जो 1 महीने पहले वाला वर्कआउट, कंपटीशन के 2 महीने पहले, कंपटीशन के 10 दिन पहले वाला वर्कआउट. उस टाइम पे बॉडी बिल्डर का इतना फोकस होता है. नो वन दे डोंट. कोई भी आ जाए, एक्टर, हीरो, हीरोइन, वीआईपी, मिनिस्टर, कोई भी नहीं है वर्कआउट से इंपॉर्टेंट, कोई भी नहीं है. XYZ कोई भी आ जाए, इफ समवन इज पेइंग यू ऑल्सो, नहीं चाहिए, मेरा वर्कआउट है. अच्छा, जो पैसे दे रहे ना, अरे यार ये ले ले, चलो
अरे मेरा वर्कआउट है, क्या ले लो. So you've learned a lot from Dada. Yes, a lot. uh, main thing what I've learned is to be in discipline, diet में, and consistency in work. Dada diet name thodi. I don't think he even had a cheat meal. I don't know about his routine or something, but what I know about him, he is the most disciplined, hardworking, and consistent. I think consistency is the only key that's needed in the sport of Even bodybuilding. you see him pro बनने के बाद, after pro, being pro, even now उनके आप सोशल मीडिया स्टोरीज देखो, ट्रेनिंग के वीडियोस डालते हैं, वर्कआउट वीडियोस, कंसिस्टेंसी. ऑफ है एवरीथिंग, ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग. मेरे को वीडियो बनाना है. मैंने फोन हाथ में ऐसे रख के, छुपके से उनका हाथ ऐसे फोल्ड रखे थे, ऐसे फोन हाथ में रख के उनका वीडियो बनाया था. वो लंजेस मार रहे थे. हाँ. ऐसे भी नहीं सर, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपका आप लंजेस मारोगे तो. आज के टाइम पे कैसे वीडियो बना रहे, हर एक वो एंगल डालते हैं, एंगल या tripod. कुछ नहीं. ही इज ट्रेनिंग. उनको नहीं पता कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने रियलाइज नहीं कराया उनको कि मैं वीडियो बना रहा हूँ. छुपके से खाली फोन हाथ में रखा है ऐसे, बस एक वीडियो, ओनली वन वीडियो. बिकॉज मुझे ये डर था, बाई चांस उनको पता चल चला गया ना हो, खत्म, मेरी छुट्टी. खत्म. क्योंकि वो जिम के अंदर एक वो है, एक मैं हूं, और कोई भी नहीं हो जिम के अंदर. ऐसे नहीं कि कोई प्लेट निकालने वाला या हेल्प करने वाला या प्लेट लगा दो, कुछ नहीं. अपने आप प्लेट निकालो, अपने आप प्लेट लगाओ, अपने आप लेग प्रेस मारना है हैवी, अपने आप प्लेट निकाल. मेरे को नहीं सर, मैं निकालू, खड़ा रहे उधर चुपचाप. Wow. So this is my basic. This is my base. जहाँ से from where I have You learned. started off. So I try to from वो point से, वो बोलते ना कि दिमाग में बैठ गया. I try to implement. Yeah. Because I've seen and मुझे result भी मिल रहा है उसका. Correct. I'm improving. Right, right. Okay, so this is what we're going to do, buddy. We're going to go on to the next segment of our podcast. Is going to be the rapid fire. Okay. Have you played a rapid fire before? Never. So rapid fire is something very simple. I'm going to be asking you a question, Okay. and first thing that comes into your mind, you tell it to me Okay. as soon as fast as possible. Are you ready? Yes. Okay, brace yourself. First question is who's the current Mr. Olympia? Derek Lansford. So how fast you were? एक उदाहरण था ये. So as fast you were, जो भी क्वेश्चन पूछूंगा आप मुझे फास्ट जवाब दे दीजिए. Okay. If you have to switch your life with someone, who would you like to switch it with? Mother. Okay. Growing up, we all watch superheroes. So if you would like to have a superpower, what My would mother. that power be? What would that superpower be? The love for the kids. Okay. If your life journey was made into a movie, Movie. which Indian actor you think would be good? I don't see movies. You don't see. I But don't you know see you know the Indian actors, right? I know the Indian actor. So Yes. which Indian actor would be good to play you on screen? Vidyut Jamwal. Super. Okay. When you're successful, you have people talking about you, right? When you're successful, people talk about you behind Yes. your back. There are a lot of rumors. Any rumor that you've heard about yourself? Yeah, a lot of rumors. I don't remember, but Okay, okay. What is the best compliment you've ever heard? compliment best from my mother only. Outside I don't consider, because I think outside के सब मतलब के लिए compliment दे रहे हैं. Right. And So, what is the compliment that your mom gave you that you liked? then I am nice human being. So, that's something that we all need to hear. अच्छा इंसान है. That's all. Maybe I am harsh, but I am good. You won't say harsh. You are being honest to whatever Yeah. you are seeing or But in being people, reality. but That's what people say. people say I'm harsh, but that's what my mother also said. He may be harsh, but he is good. Right. Good human being. Any dream brand that you wish to work with? Fitness brand. No. I'm working with a very good brand, Steadfast. Steadfast. It was a dream only, because IHFF is
fully sponsored by Someone by Steadfast. Steadfast Nutrition. Yeah. So I've used wherever you go Steadfast ka to. Right. So I got it by like by I just got it. So I don't have any bigger desire कि जो और मिला है कुछ उसको छोड़ के उसको नहीं छोड़ने की बात नहीं. Any other brand that you wish to work for? कोई और दूसरा brand है जैसे I never thought of lot of never thought मेरे दिमाग में आई नहीं बात. ठीक है. If you were not a bodybuilder or not a coach, आप क्या करते थे? What Marketing. Because you are an MBA Yeah, not because of MBA. I think I am a good seller. salesperson. Yeah, I can sell good. Okay. I can talk to people. I communicate very good. Right. So Superb. Okay. Name 3 people in your life who you're grateful for. my mother, my father, my mother. Okay. Okay. What is one secret of honey? No one knows anything about me. So, what is one secret that if you want to share with people right now? What is one secret about you that people get to know about you? जिसको लोग जानते नहीं लेकिन ये बोलने के बाद लोग को समझ में आएगा अच्छा ये सीक्रेट है. It is not easy. Whatever it is not easy. It is very difficult. But it is very easy. No, whatever is difficult, but you need to make it look easy. You're making it look really easy, but I'm sure the journey It is not difficult. easy. It's not easy. I think nothing in this world is easy. Everything you have to work hard for. Yes. दूसरे को लगना चाहिए यार इजी है. लोग बोलते हैं, haters बोलेंगे easy इसीलिए है. मैंने बोला ना. But not easy, but it is easy. It is easy, right? What is one thing in life you're most grateful for? I'm doing bodybuilding. You're doing something related to और क्या चाहिए Yes. आपको? Nothing else. Superb. Thank you very much, Hani. You did fabulously well in the rapid fire. Thank you. And we have a parampara here on our podcast. So every guest who comes here, we want to remember this wonderful moment of having this guest with us on our podcast. So I have a studio in Pune Okay. where I'm going to leave this mug in the studio. So this is the mug. This is the Andropic mic testing mug, Okay. and this is a marker. So I need you to give me your autograph on this mug, and I'm also going to keep it just in the studio. Where is it? Is this right? Anywhere, wherever you feel like, it's your mug. Wherever you feel like giving me an autograph or a message. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. You've removed your valuable time from your daily schedule to come here, be a part of the podcast. Even though you have to work out, you have your clients, you have your diet, you have a meal, but you still remove time to be on this podcast. I'm really grateful for having you here. Actually, I wanted to be because I have seen a lot of so many like jo like social media influencers and everyone, my friends, bodybuilders also, mostly men physique athletes Right. who are very close to me doing this. मन में आता है कभी मैं भी करूँगा. And this was unexpected that you like in your podcast, starting it with your podcast was like मैंने पहले ही बोला कि this is my first and a new experience. I don't know what to say or if anything कुछ. No, I think you were fabulous. I'm sure our viewers will agree with me. You were fabulous, sir. And as a token of appreciation from me and my entire team, this is a small gift to you from Andropic Mic Testing. Kindly Thank do you. accept it. Thank you. Thank you so very much, honey. It's been a pleasure interacting with you. All I can say is thank you and all the very best for your future competitions. You are an amazing, amazing athlete with a wonderful future ahead. Thank you. Thank you, sir. Thank you very, very much.